हाँ जी, ये है बुकित बिंदांग का इलाका जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बुकित बिंदांग और ये बुकित बिंदांग वॉक। यहाँ पे अरबियों की दुकानें हैं जी, शीशे की। ये देखें जी, ये है बिंदांग वॉक। ये बहुत कल्चरल इलाका है यहाँ का, कोलालमपुर का। जो अगर आप यहाँ पे आए तो ये बिंदांग वॉक एक मस्ट विजिट अट्रैक्शन है। शाम होते ही यहाँ पे रौनक मेला शुरू हो जाता है। अभी शाम हुआ चाहती है, शाम के 6 बजे इस वक्त। आल्दो मुकम्मल अंधेरा तो अभी नहीं छाया। दिस इज़ बिंदांग वॉक। यहाँ से आप चलते जाएं 1-2 किलोमीटर आगे तो वो सारी बिंदांग वॉक कहलाती है, बुकित बिंदांग से। यहाँ पे ये देखिए लोग किस तरह जमा होकर एंजॉय करते हैं। It's a kind of a Times Square, Bukit Bintang. Beautiful place. Look at Kuala Lumpur. It's a wonderful area of Kuala Lumpur. The heart of Kuala Lumpur is called Bukit Bintang. You can say it as a Times Square of Kuala Lumpur. Or you can also say it as a Piccadilly of Kuala Lumpur. Lovely atmosphere, lovely. I am loving it. The beautiful area, Bukit Bintang. And you keep on walking right or left. This is called Bukit Bintang Walk, or is called only simple Bintang Walk. So you will enjoy the shops and the shopping and everything over here. ये है वो जी चौक क्रॉसिंग। इस क्रॉसिंग पर मुख्तलिफ कल्चर्स से आने वाले लोग, ये ऊपर से देखें, वो रैपिड केएल की जो मोनो रेल है वो गुज़र रही है। और बहुत खूबसूरत यहाँ का मनाज़र है। और वन रियली एंजॉयज इफ़ ही कम्स एंड सिट्स ओवर हेयर। मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इट्स अ मेल्टिंग पॉट ऑफ ऑल द कल्चर्स दिस प्लेस। ऑल द टूरिस्ट्स दोज हु हैव अराइव्ड इन Kuala Lumpur, they are coming here. Now it's evening time and the buzz is just to start now. This is time for me to leave back to the Airbnb, but I am capturing few moments while sitting over here. You see, this is my sitting place
and this is a shawarma type some shop from where I have ordered the shawarma. It's an 11 ringgit. ये सामने चिकन वाला shawarma 11 ringgit का है. मैंने ऑर्डर किया है. This is my order. और ऑर्डर नंबर है 50. और सामने अभी ऑर्डर चल रहा है 47. ये 47 नंबर ऑर्डर चल रहा है. और मैं इस खूबसूरत मौसम जो कि अब्र आलूद है उसको और यहाँ की ब्यूटी कल्चरल ब्यूटी को एंजॉय करते हुए इंतज़ार कर रहा हूँ अपने शवारमे का. एंड दैट इज़ अ टेक अवे. I will take it away to my Airbnb because just now I have taken the meal. I am taking for my dinner.